Hi guys, welcome to the tutorial of how we're gonna create this look. This look is inspired by one of my absolute favorite book character, Allie from the Off-Campus series. Oh bhai, she looks so flawless, she looks so amazing that the moment I finished that series, my brain just refused to move on and I finally decided that I'm going to recreate it. And here I am doing it on a very acne prone skin. I have a lot of acne and scars on my face, but still bestie, don't worry about it. I got your back. Okay, so step one is skin prep because no matter how expensive your makeup is, if your skin isn't prepped, your makeup is going to fight you. So first, I'm using a toner that just wakes up my skin a little, then moisturizer, and after that, of course, sunscreen every single day. Now comes the base, which is a scary part as I refused to use foundation on my skin right now because this is a very soft look. I don't want to look so patchy, so I'm just using concealer, contouring, and that's it. It's gonna create the best look ever. Now let's hide what we want to hide. Means we use concealer. I'm not covering every single mark because honestly they are just part of me. I'm just making myself feel a little more confident. Okay, so if you have any scars or marks on your face, don't worry about that. Just color correct the same way as I am doing it. So now I'm keeping contour really soft क्योंकि जो एली वाला लुक है उसमें इतना शार्प फीचर नहीं शो किया गया है. A lifted cheek and a subtle soft look. Okay guys, just ignore my face like I'm looking stupid right now, but it's all worth it. Okay, blush time. And honestly, if someone tells me I've applied too much blush, तो भाई जब तक तुम्हारा थोपड़ा लाल ना हो जाए, जैसे कि तुम्हें सूरज की थपेड़ें पड़ी हूँ, तब तक और लगाते जाओ. Because blush makes you alive. It gives that cute, I just got butterflies kind of look. So yes, जितना blush लगा सकते हो उतना blush लगाओ. But wait, हम यहाँ पे look recreate कर रहे हैं, तो I controlled myself and थोड़ा literally थोड़ा ही blush लगाया है मैंने. Now I genuinely think eyebrows are the most underrated part of makeup. Like do them right and suddenly your whole face wakes up. I'm keeping them soft because Ellie's look isn't overly dramatic. She's more of a naturally pretty without trying too hard kind of girl. Now after completing eyeshadow, मैं mascara लगा रही हूँ. ये आपको थोड़ा dominant रखना है. Okay, so it makes it more poppy. शिट गाइस, मैं आईज में आईलाइनर लगाते टाइम रिकॉर्ड करना भूल गई. मुझे लगा शायद कैमरा ऑन है बट वो बंद था. कोई बात नहीं, यू कैन टेक अ लुक एट दैट. इट इज़ अ वेरी थिन लाइनर दैट यू हैव टू अप्लाई ऑन योर आईज एंड आफ्टर दैट आई एम मेकिंग फ्रेकल्स विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. पहले मैं उसको पेंसिल से बना रही थी पर वो नहीं बने. देन मैं उसको लिपस्टिक एंड एक्चुअल वाली पेंसिल से ड्रॉ कर रही हूँ एंड इट लुक्स वेरी नाइस. After that, I am moving on to lips. Line your lips with a dark brown lip liner from Swiss Beauty and after lining them, हम इसे थोड़ा सा soft कर लेंगे finger से because बहुत dominant lip look नहीं दिखाना है but still हम उसे overline करेंगे कि हमें सिर्फ थोड़ा सा plushy and plumpy lip look चाहिए है. And as I have small lips, I literally need to overline it. And after that मैं उसमें tint apply करूँगी which is like from Mars and this is a very good tint. You can use it too and ये थोड़े टाइम तक stay कर जाता है because इससे थोड़ा natural looking lips आ जाएंगे which is a very sharp feature of Ellie with soft hues.
And after that मैं उसमें लिपस्टिक अप्लाई करूँगी which is a very light nude shade, and of course glossy lips, bad mood gloss, no sleep gloss, life falling apart gloss. I feel like gloss somehow fixes everything, and I apply a lot of gloss. ग्लॉस में डूब जाओ, नहा लो, ग्लॉस 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 सब कुछ ग्लॉसी कर लो गाइस। मैंने अपने हेयर्स थोड़े से बीची वेव्स कर ली थी उसमें ऑलरेडी, बिकॉज इसका पूरा लुक उसके हेयर से ही आता है। बट मुझे थोड़ा सा फील हो रहा था जैसे मेरे बैंग्स थोड़े उसके साथ जा नहीं रहे हैं, सो आई टुक अ रॉन्ग डिसीजन और मे बी अ गुड डिसीजन, विल डिसाइड इट इन द एंड। मैंने अपने बाल काट लिया। अगर मेरी मम्मी ने ये देखा तो भाई साहब मैं बहुत पिटूंगी, बिकॉज मुझे हेयर्स कट करने नहीं आते, बट स्टिल आई ट्राइड माई बेस्ट टू मेक इट लुक वेरी नाइस एंड नेचुरल। थोड़े से ही कट किए थे मैंने, सो इट लुक्स प्रीटी नाइस ऑन मी। एंड देन अगेन विद अ स्ट्रेटनर आई ट्राइड टू मेक देम लुक प्रीटी पीची एंड बेबी काइंड ऑफ, एंड फाइनली here's my face, and 1 2 3 outfit was literally a very dramatic part, but finally anyhow I managed it, and here's the outcome. If you have watched till this point, thank you. Seriously, this is my first long YouTube video, so if you are here, you are officially part of the beginning of this journey. So hit the subscribe button, like, comment, share, and see you soon. Radhe Radhe.